All right. So depreciation of non-current assets. ठीक है जी. You have been using this term depreciation since grade 10 जब से आप adjustments to income statements कर रहे थे. All right. So what is depreciation? Depreciation is what is depreciation? It is the loss in the value of non-current assets over its useful life. ठीक है. Very simple. ठीक है. Due to usage, damage, obsolescence. ठीक है. Because of usage, damage or obsolescence or means outdated, outfashioned होने की वजह से भी इस तरह होता है. Okay. Why do you charge depreciation? To allocate the cost of non-current asset over its useful life. ठीक है. Number two, to charge as an expense an expected benefit derived from non-current asset. Charge as an expense an expected benefit derived from non-current asset over its useful life. ठीक है. And when do you charge depreciation? ठीक है. Number one, at accounting year end. Number two, at the time of disposal of an asset. When you dispose of an asset, either then you charge depreciation or you charge depreciation at an accounting year end. ठीक है जी. Okay, what is depreciation? Why do you charge it? And when do you charge it? There's still one question that remains. How do you charge it? Number one, straight line method. What is the formula for straight line method? So cost minus scrapbook value This is cost into minus scrap value upon year. into depreciation percentage or Hmm. cost minus scrap value upon life. ठीक है जी. Reducing balance method का formula is Sir, वो याद नहीं है. cost minus previous cost minus accumulated depreciation. times depreciation percentage. ठीक है. And the last one is revaluation method, which is the one that you use in club accounts. Opening value plus addition minus disposal minus depreciation is equal to closing value. ठीक है जी.
These are the three ways through which you charge depreciation. Say, as per your syllabus, these are the three methods: straight line, reducing, or evolution. Straight line is very simple, charging depreciation on cost. बहुत simple है. You charge depreciation on the cost of an asset. Reducing balance method, you charge depreciation upon net book value brought forward of an asset. Cost minus depreciation is net book value. ठीक है? All right. So after this, let me do an example. ठीक है? उसके बाद we'll move on to T accounts. बल्कि पहले T accounts देखते थे. For any non-current asset that you have, this would be the structure of cost account. For any non-current asset that you may have, this is the structure for provision for depreciation account. ठीक है? Cost account में this will be cost brought forward. From what? From last year. ठीक है? Number two, additions की cost. Additions means purchase of non-current asset during the year. आप डेबिट करेंगे. क्यों डेबिट करेंगे? नॉन करंट एसेट एक एसेट है. इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट. तो जो भी एसेट परचेज करेंगे यू विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, एंड एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, disposal की cost on the credit side. Now this is a cost account. In this account, asset was recorded on its original cost. ठीक है? Any further additions that are going to take place will be on its original cost. So when you are selling an asset, whenever there is a disposal, so what's going to happen? Whenever there's a disposal, disposal is always be on the cost as well. ठीक है? आज इतने कम लोग क्यों हैं? Okay, so from the non-current asset account, cost brought forward, additions on cost, disposal on cost, और year end पे आपके पास आ जाएगा cost carried down. This is on year end. On next year ये cost brought forward हो जाएगा. Next accounting year में चले जाएगा ये. ठीक है? This is simple cost account. Depreciation account is depreciation brought forward on the credit side. Why? Because depreciation asset की value को कम करता है. So it always appears on the credit side of a ledger account. ठीक है? This is brought forward from last year. ठीक है? इसके बाद charge to income statement. This is your depreciation expense for the year. Is on the credit side, and disposal depreciation on the debit side. Now, what is disposal depreciation? Total depreciation up to date of asset disposed. Up to date total depreciation of the asset disposed. जो हमने asset sell किया था. Now, if you could see the asset being sold,
कॉस्ट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकाल दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसका डेप्रिसिएशन निकाल दिया। ठीक है जी। So then you have depreciation carried down, the closing depreciation, or next year depreciation brought forward. So this is one, this is two, this happens on year end, and this is fourth. ठीक है जी। Now, what is the journal entry to charge depreciation? Uh, depreciation of non-current asset. कोई बताएगा journal entry क्या होगी? Income statement debit, provision for depreciation credit, expense बढ़ा, asset कम हुआ. This is a journal entry that you will use to charge depreciation. सही है जनाब. Okay. Based on this, मैं आपको जरा एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ. आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ठीक है. ये इनकी कॉस्ट है, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, लेट्स सपोज 30,000, और कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड हो गई इनकी साथ साथ. ठीक है. डेप्रिसिएशन पॉलिसी is 2% straight line method. इसका है 15% RBM, और टूल्स एंड इक्विपमेंट का है 10% RBM. ठीक है जी. ये तीनों है. अब आपने क्या निकालना है? तीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज को दिया निकालना है. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर. नंबर 2, एसओएफपी का नॉन करंट एसेट का एक्सट्रैक्ट बना. मेक एन एक्सट्रैक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. नॉन करंट एसेट्स का एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा? It will be like this: cost, accumulated depreciation, net book value, SOFP, non-current assets. Write down all the assets over here. 1, 2, 3. उनकी cost minus the accumulated depreciation. Accumulated means previous plus current. This is the previous up to date, and the current is the one that you will calculate. ठीक है. यही बैलेंस कर देना. इसका टोटल नीचे आ जाएगा. ठीक है. Now I'm giving you 2 minutes to do this. करो जरा इसको. Okay, so this is 10,800. Tools is again reducing balance method. 80 minus 20 times 10% is 6,000. So there's the cost.
Accumulated depreciation means previous plus current. Previous is 30, current is 4, 34 हो जाएगी. Previous is 48, current is 10,800. ये 20 है, current is 6,000. तो कॉस्ट में से ये माइनस कर लेंगे आप तो आपको नेट बुक वैल्यूज आ जाएंगी. तो दिस वाज सिंपल, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं थी. ठीक है. द रीजन वी डिड दिस इज बेसिकली के एसओएफपी के अंदर यू शुड बी नोइंग के हमेशा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होती है फ्रॉम द कॉस्ट. ठीक है जनाब. तो ओके, लेट्स लुक एट अ ब्रीफ एग्जांपल ऑफ टी अकाउंट्स. कि टी अकाउंट्स किस तरह बन रहे हैं. वी जस्ट टेक एन एग्जांपल of one asset today. Let's take it as motor vehicle at 1st January 2020. Cost is 80,000 and accumulated depreciation is, let's suppose, 20,000. ठीक है जी. उसके अलावा 1st April purchased a motor vehicle for 30,000. उसके बाद 1st of May disposed a motor vehicle जिसकी कॉस्ट थी 25 एंड उसका accumulated depreciation अप टू डेट था 12,000. उसकी सेल प्रोसीड थी the amount that you sold it for 10,000. ठीक है. And depreciation is calculated at, there are two requirements. The first is 15% SLM and the second requirement is 15% RBM. तो SLM से भी कैलकुलेट करके देखेंगे, RBM से भी कैलकुलेट करके देखेंगे. ठीक है. So this is the question. Now the cost account would not change at all. There's no difference in transactions that is happening in the motor vehicle cost account. The motor vehicle, the cost account is 2020 January 1st, cost brought forward 80,000. On April 1st, आपने addition किया of 30,000 and May 1st को disposal. Now my question is ये disposal की क्या value लूंगा मैं cost account में? Would I take this, or this? Which value would I take in the disposal of disposal in the cost account? 25,000. I will only take the cost. कि cost account में disposal की cost ही लूंगा. Not how much I sold it for, how much was its depreciation. Cost account में जब मैंने खरीदा था तो enter की थी cost. तो today when I'm selling, I will only consider the cost, which is how much? 25,000. तो December 31st पे cost carry down कितनी आ गई? This is 110,000. 110,000 minus 25, तो ये कितना आ गया? 85,000. तो 2021
January 1, cost brought forward 85,000. So this is the cost account that will remain unchanged. सही है. अच्छा जी. Now we are doing making a cost accumulated depreciation account if we are using situation A. सही है. Situation A में we are taking SLM, which is depreciation on cost. ठीक है. तो आपके पास कॉस्ट कैरी डाउन कितनी है? 85,000. ठीक है. Where did you get this cost from? This 85 from here. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे लगता है ना. तो ठीक है जी. इनटू 15% स्ट्रेट लाइन मेथड कितना आया? 85,000 का 15%. What would be the amount of it? Say 12,750. Will be your depreciation expense for the year. Very simple. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन आप अप्लाई करेंगे ऑन द कॉस्ट. दिस इज provision for depreciation of motor vehicle 2020 January 1st. Opening depreciation brought forward कितना था? 20. ठीक है जी. आपका डिस्पोजल हुआ फर्स्ट मे को 20 May 1st. डिस्पोजल डेप्रिसिएशन जो एसेट सेल किया उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल जाएगी. How much would I be writing over here? Disposal depreciation. This 12,000. And on December 31st, charge to income statement. Kitna? This is the amount which you calculated. इस पे 15% or this value is the same 12750. So on December 31st, balance carried down. So 32750 minus 12,000. So 20750. 2021 January 1st, balance forward 20750. Balance brought forward 20750. ठीक है. So this was the straight line method. Now what is different in the reducing balance method? ये हमें देखना है. Reducing balance method में you have to do one calculation to calculate depreciation charge for the year. और calculation important है. कैसे? For part B, RBM, ठीक है, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी which is cost and depreciation. So now look at this. This is simple yet um easy to understand भी है. मैं इसका फिर दूसरा वर्जन भी बताऊंगा. Now what is the cost brought forward? Cost brought forward is 80 and depreciation brought forward is 20 plus addition जो परचेज किया कॉस्ट में आया which is 30. डेप्रिसिएशन में कोई नहीं आता एडिशन माइनस डिस्पोजल जो डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट थी 25
और जो डिस्पोज की उसकी डेप्रिसिएशन थी 12। ठीक है, तो इज इक्वल टू कैरी डाउन, तो दिस इज 85 और ये कितना हुआ, 20 माइनस 12 इज 8। अब आरबीएम अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो आरबीएम इज 85 minus 12 into 15%। ठीक है, क्लोजिंग कॉस्ट, तो दिस इज द कैरी डाउन वैल्यू, द क्लोजिंग वैल्यू, तो यहाँ से आरबीएम अप्लाई होगा इस पर। क्लोजिंग कॉस्ट माइनस लेफ्ट ओवर डेप्रिसिएशन इनटू परसेंटेज, कितना आता है इसकी वैल्यू, क्या वैल्यू आती है इसकी? सर एक मिनट। 1950. 10,950। जी सर। ठीक है जी, तो आपका जो पार्ट बी में आपका अकाउंट बनना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल। Depreciation brought forward is going to be the same. Disposal depreciation will be the same. Charge to income statement will be 10. Depreciation brought forward will be 20,000. 10,950 is charged for the year. तो depreciation carried down यहाँ पे calculate हो जाएगा। 10,950 plus 20,000 minus 12,000. This is 18950. उसके बाद depreciation brought forward 18950। ठीक है, so this was a brief example of the ledger accounts of depreciation। ठीक है, अच्छा जी, एक काम और आप भी कर सकते हैं जी, आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑलरेडी 85 थी, उसमें से आप लेफ्ट ओवर डेप्रिसिएशन इज बेसिकली, लेफ्ट ओवर डेप्रिसिएशन जो मैंने यहाँ पे निकाली थी 8000। ठीक है, ये जो 8000 निकाली थी, ओ मैंने यहाँ गलती की हुई है, प्लीज रेक्टिफाई दैट। तो दिस इज 85,000 माइनस 8,000 into 15%। Can you check this again? Closing depreciation यही है ना 8,000, चेक करो जरा वापस से। This is 11,550। 5,000 minus 8,000 into 0.15, 11,550 ना। जी सर। So this is 11,550, this is 11,550, तो 31,550, तो 31,550 में से माइनस हुआ 12, तो 19,550 बचा, 19,550 बचा। ठीक है, आई मेड एन एरर ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ 8 तो मैंने 12 लिख दिया।
Now, how did I get this 8? 8 is basically देखो, this was 20 and this is 12. ठीक है? So 20 minus 12 is basically the leftover depreciation was 8, which I used further. ठीक है? So this is it with the first example. Tomorrow we will be doing